हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो होगा एक फूड ब्लॉग जो है सॉल्ट लेक एरिया में एक बहुत ही सुंदर जगह। जी हाँ, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ ट्रैवल करूंगी एंड मन हो रहा था कि वो पैराडाइज में चली जाऊं जहाँ पे है सैंटोरिनी, ग्रीस में। पर ग्रीस तो जाना होगा नहीं फिलहाल, तो मैं आपको लेके चलूंगी कोलकाता में एक ऐसी जगह जो पूरी टोटल सैंटोरिनी वाइब देती है। मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ जुगनू कैफे जो सॉल्ट लेक में है और स्लाइस ऑफ सैंटोरिनी इन द हार्ट ऑफ कोलकाता। Jugnu, located in EB Block, Sector 1, which is a walking distance from City Center 1. It's a eye-catching cafe once you enter. All white interior with blue accent just lifts up your mood, as if you are transported to the scenic island of Santorini in Greece. They have this stunning interior with minimalistic look. For sure, it's a Insta-worthy cafe to visit. Not to forget the large handmade tree right in the center. I really like the vibe of this place. Here, the staffs are super friendly and hospitable, and you can see our daily updates in Instagram and Facebook. No doubt a slice of Greece in the heart of Kolkata, this place feels like a different world. Cozy vibe, good aesthetics, great place for your first date. A quick coffee or a shisha is a great combination for sure. So, already shown you the interior, let's try out their food and beverages. Menu is already provided in Zomato and Google. They offer multi-cuisine from Indian, Asian, continental and Italian cuisine over here. Firstly, I ordered a cup of cappuccino priced at 170 rupees. Coffee was too good, no complaints at all, even the presentation was on point. Next, I ordered a lemon iced tea priced at 150 rupees. Presentation was very good, even taste-wise iced tea was perfect. The first food item I tried in Jugnu was their Vietnamese chicken skewers, which was priced at 320 rupees. Juicy chicken skewers cooked with pure perfection. I really loved the dish. I would actually recommend you to try this one. Even the presentation wise, it was really good. One bite into this chicken and you are burst with flavors. And if you're liking this video or subscribe to the channel will be so awesome for me. After this lip-smacking food experience, I was more excited about my second order. Who doesn't love a good thin crust pizza? So I ordered a smoked chicken pizza priced at 495 rupees. Smoked grilled chicken, jalapeno, olive, balsamic glazed onion. It's just a heavenly combination. One cannot resist this cheesy goodness. Jugnu is a great place to unwind with your gang and friends. Shisha here is also really good and food is something worth mentioning. So yeah, that was my Santorini vibe wala cafe experience. आई होप आपको ये जुगनू की एक्सपीरियंस अच्छी लगी होगी। आप दोस्तों के साथ, डेट के साथ जरूर जाइए। ये काफी हैपनिंग जगह है और ये वाइब एंड द होल एम्बियंस, फूड सर्विस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आपको ऐसी इंस्टा वर्दी जगह अच्छी लगी है तो मुझे इस वीडियो में जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।